बॉलिंग चेंज यहां नजर आता हुआ स्कूल एंड से वकार गेंदबाजी के मोर्चे पे, और पहला बदलाव है यहां पर AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से वकार जावेद गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, और कुछ बदलाव वो फील्ड में चाह रहे हैं आखिरी ओवर पावर प्ले का। और अब तक अच्छी शुरुआत रही है डडू रेंजर्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा। नासिर कुमार 18 और आदिल गुलदान 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बहुत समय ले रही है यहां AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स की टीम। लगातार वो बदलाव चाह रहे हैं। मिड ऑफ शॉट एक्स्ट्रा कवर, बैकफुट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, और वाइडिश मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद। और विकार जावेद गेंदबाजी करते हुए नए ओवर के साथ, और पहली गेंद स्ट्रोक लिया है, गैप में स्ट्रोक, कड़क स्ट्रोक है ये नासिर कुमार के बल्ले से। लीजिए एक और चौका, ऊपर गेंद, और नासिर कुमार तैयार थे स्ट्रोक के लिए। गैप में धकेलते हुए एक और चौका, 22 पे चले गए नासिर कुमार, और उनका बल्ला जो है आज बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस खिलाड़ी का रन में नजर आ रहे हैं नासिर कुमार, और हल्के से पुश करते हुए दूसरा रन लेने का प्रयास, और मना किया वहां आदिल गुलदान ने, और अच्छी कॉल वहां पे। दूसरा रन जोखिम भरा हो सकता था, सही समय पे वापस भेजते हुए 40 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और एक अच्छी शुरुआत अब तक रही है डडू रेंजर्स की ओर से। नासिर कुमार ने अब तक कमाल के शॉट्स खेले हैं, और आदिल गुलदान समय बिताते हुए विकेट के ऊपर, और दूसरा रन देखना चाह रहे हैं यहां नासिर कुमार, लेकिन आदिल गुलदान दूसरे छोर से रिस्पॉन्ड नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जोखिम उठाना चाहते नहीं। एक अच्छी शुरुआत डडू रेंजर्स को मिली है, और इस पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा एक बड़े स्कोर तक जाने के लिए। अगली गेंद नासिर कुमार के लिए, और बड़ा स्ट्रोक है ये, कड़क शॉट है, ऊंची गेंद और दूर भी गई है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लिख लीजिए एक और छक्का नासिर कुमार के खाते में। एक खिलाड़ी आज मूड में नजर आ रहा है, जिस तरीके से शॉट्स आज जड़े हैं इस खिलाड़ी के पास। कमाल के शॉट्स है, ऑन साइड हो या ऑफ साइड हो, डाउन द ग्राउंड हो, शॉट्स आपको नजर आएंगे नासिर कुमार के बल्ले से। एक बार फिर उससे भी बेहतर ये गया शॉट, लेकिन नीचे इस बार खिलाड़ी, और वो कोई गलती नहीं करेंगे। लॉन्ग ऑफ रीजन पे ऐसा लगा था कि दूर गेंद जाएगी, लेकिन इतनी दूरी थी नहीं कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को वो भेज सकें। और नासिर कुमार एक अच्छी शुरुआत के बाद वापस जाते हुए और निराश रहेंगे, और ये हमने कितनी बार इस टूर्नामेंट के अंदर देखा है। एक अच्छी शुरुआत के बाद बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और नासिर कुमार 29 की इनिंग्स खेलने के बाद 16 गेंदों पर वापस जाएंगे और निराश रहेंगे। इस बार वो एलिवेशन मिला नहीं, वो दूरी मिली नहीं, और ऊपर गेंद रही बहुत देर तक। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, और विकार जावेद वो काम करते हुए यहां AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स के लिए जो बहुत समय से दरकार था। पहला विकेट AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स को, और अब जाएंगे टीम के कप्तान आसिफ मंजूर। लंबा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, 190 से ज्यादा मुकाबले, और फिलहाल पहला विकेट AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स को मिलता हुआ। और ये है टीम, ये विकेट जरूर इस टीम का मनोबल बढ़ाएगी। आखिरी ओवर पावर प्ले का, और ये है जम्मू कश्मीर क्रिकेट की आन बान शान परवेज रसूल। आपके कैमरा स्क्रीन पे श्रीलंका के एक मेजर लीग में इस खिलाड़ी का दबदबा रहता है, हर जगह जहां जाते हैं परफॉर्म ये खिलाड़ी करता है। शतक और 8 विकेट, परवेज रसूल द लेजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट, और एक क्रिकेटर के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान। और आरजे बशीर लगातार आप तक स्टेट स्पोर्ट्स लाइव और बिजबिहारा प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पेज से आप तक लाइव टेलीकास्ट पहुंचाते हैं, और कैमरा वर्क पिछले दिनों की अगर हम बात करें कमाल कर रहा है। कल जो स्ट्रोक जड़ा था शाकिर ने, जहां गेंद शीशे से टकराई थी, कमाल का ये
कवरेज पूरे टूर्नामेंट के अंदर रहा है स्टेट स्पोर्ट्स की ओर से। ओवर समाप्त और पावर प्ले के खेल के बाद 53 है बोर्ड पे, 53 एक विकेट के नुकसान पर डड्डू रेंजर्स। पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवरों के बाद 53 है बोर्ड पे, 53 एक विकेट के नुकसान पर डड्डू रेंजर्स। टॉस जीता था आज AlSafeer टूर एंड ट्रेड्स के कप्तान ने, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय यहां पे लिया। और ये फैसला कितना सही साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आदिल गुल्टान, साकिब मीर गेंदबाजी के मोर्चे पे नजर आएंगे। पारी का 7वां ओवर, पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन समाप्त और आदिल गुल्टान इस गेंद को ऑन साइड की ओर मोड़ते हुए, वहां पीछे खिलाड़ी मौजूद एक सिंगल के लिए। चमन एक विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पारी का। और अब आसिफ मंजूर टीम के कप्तान डड्डू रेंजर्स, अनबीटन टीम इस टूर्नामेंट के अंदर रही है, चारों मुकाबले इस टूर्नामेंट के अंदर जीती है और मनोबल 7वें आसमान पर इस टीम का होगा। कमाल का क्रिकेट इस पूरे कंपटीशन के अंदर डड्डू रेंजर्स ने खेला है। एक बार फिर दूर से बल्ला चलाने का प्रयास किया जा रहा है आसिफ मंजूर द्वारा। और मेरे साथ ही इंग्लिश कमेंटेटर द वन एंड ओनली इरशाद भाई ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत और खुश आमदीद इरशाद भाई आपका। देर से आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपके पहले थॉट्स इस मुकाबले के हवाले से। Thank you very much. A warm welcome to all the viewers out there. No ball has been called, 54 for 1. This is the 7th over of the innings, and as you already know that this is semi-final number 2. Dadoo Rangers are up against AlSafeer Tour and Travels. The journey has been contrasting. AlSafeer Tour and Travels have punched their ticket to the semi-final berth by winning all the matches, as compared to them, on the other hand, AlSafeer Tour and Travels, they have been a mixed bag in this tournament, winning some crucial matches and losing a match as well on their way to the semi-finals. This has gone up in the air, no fielder, and that will crash into the fence at backward point. Adil Guldan is looking in a mood today, and this is the exact way he plays. Once again, length was there, and he was quick to pounce on that and smashed it. He's a dangerous player. Adil Guldan and Nasir Kumar, they provided a blistering partnership first up, and he has got that type of play as well. He goes off to the bowling, he tries to hit the ball so hard, but then he has got the touch play as well. That's important if you are opening the batting from your team's perspective. It's very important for you to have that mixed bag of tricks up your sleeve. That's what exactly he has. It's not about hitting those powerful shots, hitting sixes and boundaries. It's about rotating the strike. That's been the hallmark of this young man
Adil Farooq. And who will forget that innings of Asif Mars, a captain's knock against an important contribution for his team in that match. 62 for the loss of 1 wicket. This is over number 7 in progress. Toss was won by AlSafeer Tour and Travels, and they have done so far in the tournament. This has been a trend. They have already decided to fail first in this match as well. Understandably so, because they have got a very good depth in batting. They want to chase any total which is posted by Dadoo Rangers, because they have got plenty of batters and they have got resources to do that. Asif Manzoor, Adil Guldan, Ankit Singh, Danish Muzaffar, Faisal Dar, Gauhar Lagi, one of the important main members, Nasir Kumar, Nasir Ganai, Nasir Rasool, plenty of Nasirs in this team, Sohail Paul and Wasim Raza. This is going to be the squad of Bijbehara Premier League. And talking about AlSafeer Tour and Travels, Asif Yusuf has taken a hat-trick in this tournament. Adil Rishi has joined the team, Akib Maxi as well. Asif Mughal, Amir lefty, Shakir Barood, Ishfaq lefty, Shakir Zahoor, Junaid Dar and Wikar. These two batters, Adil Guldan and Asif Manzoor. Asif Manzoor is doing the right thing. He's not trying to go after the bowling, but we know what kind of prowess he possesses. This time deft touch. Fielder was on the edge of the circle. The batsman crossed over for a single, and that single takes the total to 64 for 1. Manzoor Bhai talking about this partnership that is flourishing between these two. Early days in this partnership. Meanwhile, there was air given. It was blasted down the ground. Wikar has picked up a wicket, an important wicket of Nasir Kumar, who was looking threatening first up, and then, as we know, his customary style of play, he always tries to hit every ball out of the ground, and he was dismissed in that customary fashion in this match as well. But talking about Adil Guldan, he's a big match player. He likes to play bigger innings in important matches, and today is do or die. It is now or nowhere. It's now or never situation for both of these teams. And talking about the bowling of AlSafeer Tour and Travels, this is over number 8 in progress. It has been a comeback after that onslaught from both the openers, as here is Wikar once more. This time using those wrists. 2 is the call straight away. Will they go for it? They have gone for it, and they have completed comfortably in the end. 2 more runs. This is good running between the wickets, and we have seen so many players there going out and running the first run very hard. And it's important, if you're knocking the ball in the gaps, playing with soft hands, it's important for you to run that first run very hard, and then you have the chance of coming back and completing the second run. That was exactly what they did. 2 more runs to complete the over. 8 done. It's 69 for 1. जी हाँ, एक अच्छी शुरुआत यहाँ डैडू रेंजर्स के लिए, और लेकिन आदिल गुलडान समय लेते हुए 24 गेंदों से 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इससे कहीं बेहतर खिलाड़ी हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं। समय बिताया विकेट के ऊपर, और इस समय का वो लाभ लेना चाहेंगे, शुरुआत का वो लाभ लेना चाहेंगे। बड़ा मंच है, और यहाँ अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपका कट बहुत ऊंचा हो जाता है। ऐसे मंचों पर जब भी आप रन्स बनाते हैं तो रन्स बहुत समय के लिए याद रहते हैं। सेमीफाइनल मुकाबला, इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल।
आदिल ऋषि गेंदबाजी के मोर्चे पे नजर आएंगे और पहला ओवर वो अपना करेंगे। पारी का 9वां ओवर होगा। अनुभव की कोई कमी है नहीं इस खिलाड़ी के पास और गेंद सौंपी जा रही है कप्तान AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स विश्वास जताते हुए आदिल ऋषि के ऊपर और उन्हें गेंद से काम करने का आदिल ऋषि गेंदबाजी के मोर्चे पे आदिल गुलदान 24 गेंदों से 26 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और कड़क टारगेट करते हुए गैप में स्ट्रोक को ढूंढते हुए और यही करना होगा आदिल गुलदान की अगर हम बात करें। 73 एक विकेट के नुकसान पर चौके के साथ। It was full and wide. An invitation was accepted by Adil Guldan. He smashed it. Adil Rishi has to be careful. He's got that military medium pace that's well fielded. In the gully region there was a fielder that was guided. He was trying to use that big gap between backward point and gully. So there was no one backing up on the third man boundary. That was exceptionally fielded there. This time he cuts it. Won't find the boundary though. It has gone straight to the fielder. They're coming back for a couple. This is excellent running between the stumps. They knew that the fielder is off the blocks quite slow on that occasion. It was Asad Mughal sweeping on the offside at deep cover. Took some time to move to his left. In the meantime, the batsman complete two more. That one kept low outside the off stump. I was talking about Adil Rishi. He's got that military medium pace. Sometimes he would like to just use those cutters. This ball is 8 overs old. He's bowling the 9th over. 76 for the loss of 1. This is over number 9 of the innings of Dadoo Rangers. Adil Rishi. This time comes forward. Could not lay bat onto the onto that ball the way he would have liked. He was trying to just maneuver that length towards the onside because there is a deep backward square leg on the boundary and there is a deep mid wicket on the boundary. Plenty of real estate between these two fielders and he was trying to use that, not giving any pace whatsoever. Nine overs done. It's 78 for 1. ओवर पारी का शुरू होने जा रहा है। 78 रन डडू रेंजर्स हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक विकेट के नुकसान पर वाइडिश मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद। मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंदबाजी के लिए विकास जावेद कामयाब बॉलर अब तक रहे हैं। वाहिद कामयाब बॉलर नजर आए हैं AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से। एक विकेट नासिर कुमार का उन्होंने लिया था। आदिल गुलदान 28 गेंदों पर 32 रन उन्होंने बनाए हैं और सिर्फ 111 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी समय अब तक बीता है 10वां ओवर खेल का और क्या वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए अब जाएंगे इस बार गैप में जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी एक सिंगल के लिए जाएंगे और आदिल गुलदान एक शुरुआत उनको मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस शुरुआत को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 79 एक विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स। टीम के कप्तान आसिफ मंजूर 8 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी।
यहाँ से एक विकेट के नुकसान पर आसिफ मंसूर, स्लो मोशन के और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक सिंगल सीधा फील्डर के हाथ में, धीमी गति से डाली हुई गेंद, घुटना नीचे और बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, उस स्लॉक स्वीप एक्शन में नजर आया था आसिफ मंसूर द्वारा, लेकिन एक सिंगल के साथ 80 एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर और आदिल गुल्टान 39 23 गेंदों से 86 एक विकेट के नुकसान पर डड्डू रेंजर्स की ताबड़तोड़ शुरुआत, और अल्सफीर टूर एंड ट्रेवल्स दबाव की स्थिति झेलती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद, और इस बार तेज गति से गेंदबाजी में मिश्रण जरूर नजर आया, एक सिंगल चुराते हुए। चालीस पर चले गए आदिल गुल्टान 31 गेंदों के अंतर्गत 5 चौके और 1 छक्का, और वो जो हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, एक समय पे 110, और यहां मिसअंडरस्टैंडिंग और ये विकेट मिल सकता है, और ये खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यस नो के चक्कर में अंततः आसिफ मंसूर टीम के कप्तान वो वापस जाएंगे। और ये देखें, बहुत आगे आए थे और फिर इरादा बदला, लेकिन जब तक जनाब इरादा बदलते तब तक देर हो चुकी थी, और दूसरा विकेट, और ये रनआउट के रूप में बोनस है अल्सफीर टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, संघर्ष कर रही थी विकेट के लिए, और इससे बेहतर समय क्या हो सकता था विकेट लेने का अल्सफीर टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। 87 और 10 ओवरों का खेल इसके साथ ही at halfway stage. 87 for 2, losing an important wicket, misunderstanding, and both the batsmen ended up in the middle of the pitch. Adil Guldan regained the safety of his crease, but Asif Manzoor was found short as he was trying to complete that single. $87 for the loss of 2 wickets. Scoring rate is okay, 8.70. 10 overs have been bowled. Suhail Paul is the new man walking to the middle. He is an accomplished batter. He is in supreme form. He has made a century as well at Sportsfield Kunzar. He was brilliant that day, and he has played some important knocks. Today is no different. Important game, important stage of the game, as here is Adil Rishi at one, kept low outside the off stump as he was trying to thrash it outside the off stump. There is a huge gap between the fielder who is sweeping on the offside. A deep cover boundary is a backward point inside the ring, and now third man has been sent at a wideish position on the boundary to give that extra bit of protection to Adil Rishi. Adil Rishi is a street smart customer. He'll come up with those changes, with those variations to unsettle the new batter. But Suhail Paul played sensibly on that occasion. He's off the mark with that single. Now Adil Guldan, who's looking good, is on 40 of 31, and Dadoo Rangers raced up to 88 for the loss of 2. Now third man has been asked to come inside the ring once more. Adil Rishi to Adil. Adil this time whips it away onto the onside. The batsman
were thinking of a second run which was never there, so content with that one. The total moves to 89 for 2. 3 more balls to come in the 11th over. Sohail Paul has been a backbone for every team he has played in that middle order, and for Dadoo Rangers he will be a key. Apart from Adil Guldan, this time rides the bounce beautifully, but third man is on the boundary. This is brilliant strategy from Adil Rishi. He knows that Adil Guldan likes to go down the ground, and in that mid-wicket square leg region he's got fielders there. He's got a fielder at deep fine leg on the boundary, he's got a fielder at deep mid-wicket, he's got a fielder at long on, so he has protected that area where Adil Guldan likes to hit. And as soon as Sohail Paul comes on strike, he takes that third man on the boundary. This time dug out nicely. The batsman wanted to, but Adil Rishi and the other fielder ensured that the batsmen are restricted with just one. So far Adil Rishi has given away 4 runs in this over. 13 runs so far with one more ball to come in the second over of his. 91 for 2. Final ball of the 11th over coming up. Dadoo Rangers would love to get near to 180, 190. As we saw, 180 proved to be a paltry total against the likes of Rohan Rathi, who's going great guns blazing the other day. As Adil Rishi for the final time in this over, well played, showing the full face of the bat, playing sensibly to pick up a single to finish over number 11. Dadoo Rangers put into bat are 92 for the loss of 2 wickets. Adil Guldan is batting on 42, and Nasir Bashir was the man to be dismissed. He scored a quick fire 29. Asif Manzoor, nothing for him today. He scored only 2 runs, was run out, and Dadoo Rangers' current run rate is 8.36. Talking about the inexperience that AlSafeer Tour and Travels have. AlSafeer Tour and Travels, it has been a tournament where there were ups and downs for their team, but they have managed to sneak in and sneak through, I should say, and book their place in the semi-finals. Now in the semi-final they have the services of Adil Rishi, and Adil Rishi, we know what sort of experience this bloke possesses. That experience might do a world of good for the team of AlSafeer Tour and Travels, both with the bat, the ball and infield. बिल्कुल कोई दोहराई इसमें है नहीं. और इस बार स्ट्रोक लिया वहां सोहेल पॉल ने एक सिंगल के लिए. 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर, और आदिल गुलडान के ऊपर नजरें रहेंगी. 33 गेंदें अब तक इस खिलाड़ी ने खेली हैं, 42 रन अब तक जोड़े हैं, और पिछले ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक. और इस बार ऑफ साइड के ऊपर से खिलाड़ी नीचे, और उनके सर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए जाते हुए खिलाड़ी बाहर चला गया. करारा स्ट्रोक आदिल गुलडान के बल्ले से डाउन द ग्राउंड, और इस बार कवर के ऊपर से छक्के के साथ स्कोर. 99 2 विकेट के नुकसान पर 48 पर आदिल गुलडान 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. और इस स्टार्ट यहां मिला है आदिल गुलडान को, और इस स्टार्ट को वो कन्वर्ट करना चाहेंगे. समय उन्होंने विकेट के ऊपर बिताया है. उन्होंने मालूम है कि विकेट के ऊपर अगर आप रुकेंगे तो इस विकेट के ऊपर आपको रन्स मिलेंगे. रोहन राठी की वो कल के इनिंग्स 122 कमाल का वो मैच विनिंग नॉक था रोहन राठी के बल्ले से, और बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब फाइनल्स में पहुंच चुकी है. और आज दूसरी टीम होगी इस मुकाबले से जो फाइनल्स के लिए प्रवेश करेगी, और संडे भिड़ेगी बिजबिहारा स्पोर्ट्स फील्ड से. और यहां सिंगल चुराते हुए आदिल गुलडान. विकार जावेद लगातार अपना चौथा ओवर कर रहे हैं. 36 रन
और अब तक एक विकेट उन्होंने हासिल किया है। नासिर कुमार को उन्होंने चलता किया था लॉग ऑफ रीजन पर, और लीजिए बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी इस बार मौजूद। एक रन आदिल ऋषि वहां मौजूद, एक सिंगल के साथ 100 रन पूरे होते हुए डडू रेंजर्स साउथ 4 विकेट के नुकसान पर, और एक अच्छी शुरुआत मिली है इस टीम को और एक बड़ा स्कोर वो देखना चाहेंगे। और लीजिए इस एक सिंगल के साथ आदिल गुलडान अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। 36 गेंदों का समय लिया और 50 रन जड़ते हुए, और इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक लाजवाब बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की है। और लेकिन इस स्टार्ट को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंखें जमी है इस खिलाड़ी के ऊपर। 12 ओवर खेले हैं, 102 विकेट के नुकसान पर 12 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। जहां आदिल गुलडान की हम बात कर रहे थे, ये जो स्टार्ट वो देख रहे थे, समय बिताया विकेट के ऊपर, और अब अपने स्ट्रोक्स लेने होंगे यहां से आदिल गुलडान को। This is the exact way of doing it. Well, Nasir Kumar came, he promised a lot, he played some extravagant strokes, but too much extravaganza, being too much extravagant, well, it leads to your demise, it leads to your downfall. It was the exact story that happened with Nasir Kumar, but Adil Guldan, he has been steadfast. He knows that this is the big game, big stage. His team needs his services out there, and he has shouldered that responsibility. As I already mentioned, that he has got that stroke play as well as that touch as well. He is a touch player, he's a wristy player as well, apart from the use of that brutal force. He's a short man, elegant, and he likes to spend time out there in the middle. Here is Adil Rishi once more. This time inside, edges it onto the pad. Adil Rishi mixes his deliveries quite well. He bowls with lots of variations when he comes on to bowl. He uses those cutters and bowls those slower deliveries dug into the pitch. He never offers any pace to the two batters. Adil Rishi, one of the important members, and his role will be important for AlSafeer Tour intervals. So far he has given away 14 runs. This is the third over that he is bowling from the market end. 100 comes up for Dadoo Rangers in over number 13. They are 102 for the loss of 2 wickets. Adil Guldan batting on 50 of 38, and a fielder is down there, is trying to stop that shot played by Adil Guldan. Is down for the count. He's been given that medical attention and rehydration break for him as well. The 12th man is with him. Now I think the things have been sorted out. Everything is in readiness. Sohail Paul is not out on 5 from 7, and every one of us know what kind of a player Sohail Paul is. He also likes to spend time in the middle, and once he's set, he plays his shots, and he's always a fan of playing those marathon innings, those big innings. We've seen so many players using that aggression earlier on, trying to use those restrictions, the field restrictions in the power play, and then once the power play is over, they settle themselves and they go for the big score. That's exactly what Adil Guldan, chance of a run out, but the fielder did not throw. Was that the right kind of a ploy? There was a fielder at deep mid wicket, and immediately he pointed out that there was no one backing up, and that's why I was not able to throw. Otherwise, Sohail Paul, he was in the middle of the pitch, he was trying to sneak a single there. He will remain on 5, 103 for 2. Adil Rishi hasn't picked up a wicket here. He has to pick up a wicket for his team. This time goes down the ground, will not be more than a single to Sohail Paul. He moves to 6 from 9. Final ball of the 13th over coming up, 104 for the loss of 2 wickets.
Dadoo Rangers batting first in semi-final 2 of Bijbihara Premier League Edition 3 here at Bijbihara Sports Field. It's quite warm out there in the middle, as we already know that September heat is quite soaring. This time he comes down the wicket and he has got good amount of bat onto that. That has been smashed and that's gone for a 6 over long on. Brilliant shot coming down the wicket, pitch of the ball, smack out of the middle of the bat. Good camera work once again, and ball getting a lot of height, distance as well. It's 1-1-0 for the loss of 2 wickets. Dadoo Rangers. जी हाँ, आदिल गुलदान जिन्होंने समय विकेट के ऊपर बिताया था और लॉब लेते हुए खराब गेंदबाजी यहाँ AlSafeer टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से आदिल ऋषि लगातार बांध के उन्होंने रखा था। अब तक 15 रन खर्च किए थे तीसरा ओवर, लेकिन आदिल गुलदान वो बड़ा ओवर देखना चाहते थे और प्रयास रहेगा यहाँ से डड्डू रेंजर्स को जो शुरुआत मिली है 110 बोर्ड पे है, 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी। 42 गेंदें अभी भी बची हैं डड्डू रेंजर्स के पास और प्रोजेक्टेड स्कोर इस रफ्तार के साथ 8.46 के औसत से रन्स बन रहे हैं। 170 रन और इस विकेट के ऊपर हमने देखा कि 177 रन बनाए थे कल। एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने, लेकिन वो चीज किए थे यहाँ पे बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब ने। 7 ओवरों का खेल आना बाकी। आसिफ यूसुफ के हाथ में गेंद और अब तक विकेट मिली नहीं है। एक खिलाड़ी जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर हैट्रिक ली है, वाहिद खिलाड़ी आसिफ यूसुफ की अगर हम बात करें। आदिल गुलदान 57 और सोहेल पॉल 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्टेज सेट हैं डड्डू रेंजर्स के लिए यहां से एक बड़े लक्ष्य तक जाने के लिए। शॉर्ट गेंद और बल्ला लगा, लेकिन वहां पीछे विकेट कीपर मौजूद, बल्ला चलाने का प्रयास किया था इस बार सोहेल पॉल ने। गुलदान 40 गेंदें अब तक उन्होंने खेली है, 57 रन पे नाबाद। और सोहेल पॉल हम जानते हैं कि बहुत खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। 10 गेंदों से अब तक 6 रन उन्होंने बनाए। अगली गेंद और इस बार वहां सिरा लगता हुआ और गेंद वाइड स्टेटमेंट की और जब्त खिलाड़ी और दूसरा रन लेने का प्रयास। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कमाल की रनिंग आज रही है डड्डू रेंजर्स की ओर से। सिंगल्स को कन्वर्ट किया है डबल्स में, तेज भागते हुए। जब भी आप दूसरा रन देखना चाहते हैं तो पहला रन आप तेजी के साथ भागना चाहते हैं और वही प्रयास दोनों खिलाड़ियों द्वारा। आदिल गुलदान इशारा करते हुए कि डगआउट की ओर कि पानी भेजा जाए, क्योंकि आसान है नहीं। 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है आज, तो ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखना जरूरी खिलाड़ियों के लिए। अगली गेंद इस बार स्लोअर गति से डाली हुई गेंद, क्या दूसरा रन देखना चाहेंगे? गैप में गेंद गई है और जी हां, दूसरा रन अर्जित करते हुए खिलाड़ी के ऊपर दबाव। और एक और बार वो जो हम बात कर रहे थे कि पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन फिर आसानी के साथ ले सकते हैं। खिलाड़ी के ऊपर दबाव डालने का प्रयास लगातार हो रहा है। जो डीप पे खिलाड़ी मौजूद सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े शॉट्स लग रहे हैं, चीजें सही जा रही हैं डड्डू रेंजर्स के लिए। That has been the hallmark of batting of Adil Guldan. Running between the wickets is exceptional. Skate, that's taking a huge toll out of everyone. This guy is swift over 114 for 2. The next peeping low.